0 to P7 टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं। कैसे अप्लाई करना है, कौन से क्वेश्चंस में अप्लाई होगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट एक बार शॉर्ट में सबका ब्रीफ दे देता हूं। देखो एक्चुअल में समझ में तो तब आएगा जब हम अप्लाई करेंगे, बट फिर भी एक शॉर्ट में बता रहा हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या है, लिमिट्स आर सेम, फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स integrating with respect to dx. If we are replacing the variable x को replace करें t से, then this definite integral will result the same which we will get in place of when we are integrating with respect to t. तो x को अगर t से replace कर दोगे तो ओवरऑल जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी डेफिनेट इंटीग्रल की वो सेम होगी। क्लियर? It is not substitution. It is like अगर इंटीग्रेशन 1 to 2 x square dx निकालोगे या इंटीग्रेशन 1 to 2 t square dt निकालोगे, you will get same results. So x square का इंटीग्रेशन क्या होगा, x cube upon 3, limit will be from 1 to 2. t square का इंटीग्रेशन with respect to t क्या होगा, t cube upon 3, limit will be from 1 to 2. So same numbers आपको मिलेंगे अल्टीमेटली सॉल्व करने पे। ठीक है, अभी इस पे फोकस करो। ओके, ये क्लियर फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी इज if we interchange the upper and lower limit. For example, here the lower limit was initially a and upper limit was initially b. If we replace the upper and lower limit, then we will get minus of that complete integral. Clear? Okay. Next property देखना, ध्यान से समझना। अगर मान लो इस तरह से कोई फंक्शन है, इंटीग्रेशन ये बहुत यूज होगी स्टार्टिंग में सब बहुत सारे क्वेश्चंस में। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन 1 to 5 x square dx, we want to calculate this. So if any other number is in between these two intervals 1 to 5, so we can break the complete integral as 1 to 3 x square dx plus integration 3 to 5 x square dx like this. तो पूरे इंटीग्रल को हम 2 पार्ट या 3 पार्ट या 4 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। वो जो लिमिट है उसके बीच के इंटरवल में से आनी चाहिए वो नंबर्स। तो यहाँ पर लिखा है a to b can be break in 2 parts, a to c, c to b, where c should be in between a and b. Clear? नहीं, कई क्वेश्चंस में नहीं कर सकते, इस वजह से ये प्रॉपर्टी यूज हुई। यस, अभी पता चलेगा वो चीज, पहले ये समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज दिस P3. So P3 ये important property है। If a function f of x is from a to b and if we replace this complete function, the complete function x from this value a to b minus x, then we will get same integral. मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखो यहां ध्यान देना। फॉर एग्जांपल अगर हमको निकालना है इंटीग्रेशन 2 to 3 x square dx, ठीक है। सो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इसका इंटीग्रल आएगा x cube upon 3, लिमिट विल बी फ्रॉम 2 to 3, करेक्ट। वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट सम नंबर दैट विल बी डेफिनेट इंटीग्रल। एंड व्हेन वी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी P3, so here a to b it will remain same and the value of x in this function will be replaced by a plus b. So here a plus b is 2 plus 3, so 2 plus 3 क्या हो जाएगा 5। तो ये जो फंक्शन है इसमें x किससे रिप्लेस हो जाएगा, 5 से रिप्लेस हो, 5 माइनस x से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस x का होल स्क्वायर dx। क्लियर हुआ ये चीज? सो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा और इनिशियली जो रिजल्ट मिलेगा दोनों क्या होगा, सेम होगा, ये बताना चाह रहे हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पेशल। हाँ, क्योंकि ये फंक्शन में एक्स स्क्वायर है ना, फंक्शन में अगर e की पावर x रहता तो वो जो x है उसमें रिप्लेस हो जाता 5 माइनस एक्स। क्लियर? फोर्थ प्रॉपर्टी इज ए स्पेशल केस ऑफ थर्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी में लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है। सो जस्ट
change this function, this part a plus b with 0 plus a, you will get a, so it will be a minus x. Correct. Fifth property, fifth property, 0 to a f of x, so we can divide in two parts, 0 to a f of x plus 0 to a f of 2a minus x, like this. ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर अपर लिमिट जो है वो 2a है, तब उस केस में इस तरह से डिविजन होगा. ओके. नेक्स्ट, again the next two properties are also important, especially this one, last one. Okay, so this property, if integration 0 to a f of x, it is there, so we can write it as 2 times 0 to a f of x if f of 2a minus x is equal to f of x. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये दोनों में ये डिफरेंस है, ये वाले में, इसमें और इसमें बोल रहा हूं ना, ये दोनों में ये डिफरेंस है, ये P5 का स्पेशल केस है P6. अगर मान लो ये वाला जो पूरा फंक्शन है, ये वाला पूरा फंक्शन f of 2a minus x, इफ इट इज इक्वल टू f of x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to a f of x dx. ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा, 2 times 0 to a f of x. और अगर ये जो पूरा फंक्शन है f of 2a minus x, ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो यहां पर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा, तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे और ये ओवरऑल इंटीग्रल आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. क्लियर हुआ ये चीज. तो उसका स्पेशल केस है, अगर इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की इक्वल है तो ऊपर वाला पार्ट, और माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल है तो नीचे वाला पार्ट यूज हो. ओके. Okay, the last property is for even and odd function. So first I have to explain what is even function and what is odd function. किसी को पता है even odd functions क्या होते हैं? नहीं पता है? Okay. So ये नोट कर लेना, because इस पे based questions बन सकता है. Even and odd functions. Even and odd functions. ठीक है. So first है even function. Even function, if f of minus x is equals to f of x, then function is even. Then function is even. अब कौन से फंक्शन इवन फंक्शन होंगे? फॉर एग्जाम्पल, अ फंक्शन इज लाइक दिस, f of x is equals to x square. So when we replace x with minus x, so f of minus x will be minus of x whole square, correct? So it will be x square, correct? So here f of minus x is equals to f of x. So this function is an even function, correct? Now come to the odd function. Odd function. Odd function. If f of minus x is equals to minus times of f of x, is equal to minus times of f of x, then the function is odd. Then the function is odd. जैसे कि f of x is equals to, simply मैं लेता हूं x, correct? So when we replace x with minus x, we will get minus of x, correct? और ये जो x है, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? f of x से रिप्लेस कर सकते हैं. So f of minus x is equals to minus times of f of x. So this function is odd function, correct? सो प्रॉपर्टी P7 क्या बोलता है, ध्यान से समझना, मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा. वैसे आपको P7 ये बोलता है कि अगर आप माइनस a टू a, यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, बट यहाँ पर माइनस a टू a मतलब सेम है लेकिन साइन अपोजिट है. अगर उसमें फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, फंक्शन इवन है तो 2 टाइम्स 0 टू a हो जाएगा, और अगर फंक्शन ऑड है तो उसका इंटीग्रल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. क्लियर ये चीज? अब मैं आपको इवन ऑड फंक्शन में ऐसा क्यों मिलता है इसको ग्राफिकली समझा देता हूं, और इवन ऑड क्लासिफिकेशन ग्राफिकली भी समझना. सो द इवन फंक्शन विल लुक लाइक दिस. इवन फंक्शन विल लुक लाइक दिस.
इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये उसके अलोंग सिमेट्रिक होगा, मतलब अगर हम इसको फ्लिप करेंगे, फोल्ड करेंगे, सो ये दोनों चीजें ओवरलैप करेंगी इवन फंक्शन में। क्लियर ये चीज? सो इफ वी इंटीग्रेट इवन फंक्शन फॉर द इंटरवल -a2 plus a, for this interval if we are integrating a function, तो इस पूरे इंटीग्रल में क्या होगा? इस पूरे इंटीग्रल में इंटीग्रल एक्चुअली हमको क्या देता है? एरिया। तो ये वाला रीजन का एरिया मिलेगा हमको, क्लियर ये चीज, और ये वाले रीजन का एरिया मिलेगा, और एरिया का सम मिल जाएगा हमको, ये चीज क्लियर हुआ? ये दोनों एरिया क्या होंगे? सेम होंगे, बिकॉज सिमेट्रिकल है ना। सो अगर ये एरिया 2 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, तो ये एरिया भी कितना होगा? 2 स्क्वायर यूनिट। सो आप 0 टू a का इंटीग्रल निकालो और उसको क्या कर दो? डबल कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो आपको ओवरऑल इंटीग्रल मिल जाएगा। इसलिए अगर इवन फंक्शन है तो उसने क्या बोला? 0 टू 2 निकालो एफ ऑफ एक्स dx और उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? 2 कर दो। क्लियर हुआ ये स्टेप? ये पार्ट क्लियर? अब अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है तो वो कैसा दिखेगा वो समझते हैं। इफ द फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, सो लाइक दिस, वो ऐसा कुछ दिखेगा। अब अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं -a2 प्लस a में, -a2 प्लस a, सो -a to 0 में ये रीजन ये वाला हो जाएगा, समझ में है? 0 टू a में ये रीजन क्या होगा? ये वाला होगा। क्लियर ये चीज? सो यहां पर जो एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा, यहां पर एरिया पॉजिटिव आएगा विद सेम मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस एरिया इज +5 यूनिट, दिस एरिया विल बी -5 यूनिट, एंड वी एड इफ दीज टू रीजन, देन वी विल गेट ओवरऑल 0। क्लियर? दैट्स व्हाई जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ऑड फंक्शन को -a2 प्लस a, तो वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ओके, सो ये ओवरऑल कंसेप्ट था प्रॉपर्टीज का और कुछ स्पेसिफिक केसेस का। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो एक्सरसाइज 7.12 क्वेश्चन नंबर 1। 7.12 क्वेश्चन नंबर 1। So in question number 1, first part we have to integrate -1 to 1 mod x dx, correct? Okay, so first we have to check whether this function is even function or not. Now listen to me carefully. It is not necessary that every function should be either even or odd. It is also possible that a function is neither even nor odd, correct? So it is possible that a function cannot be even or cannot be odd. So here this function, here the function is f of x is equals to mod x, correct? So this function is even function or odd function? It is even function or odd function? So how we can check whether it is even or odd? By two ways. First, by replacing x with minus x. So when we replace x with minus x, we will get mod of minus x, and mod of minus x is nothing but mod of x. So f of minus x is equals to mod of x, correct? So it means f of minus x is equals to f of x. So this function is an even function, correct? So if a function is even function, then we can apply that property, integration minus a to a f of x dx. We can write it as 2 times 0 to a f of x dx, correct? Is this step clear? So here we can write it like this, integration 0 to 1 mod x, sorry, 2 times 0 to 1 mod x dx, correct? Okay. Now, Sir, we'll be writing -1 to 1. no, 0 to 1. Here it will be 0 to 1. Because look at that property, by this property, that P7. P7, if it is minus a to a, if it is minus a to a, and if the function is even, so we will write 2 times 0 to a f of x dx, correct? Okay. So is this clear? Now, what is mod x? How we can write mod x? How modulus function is defined?
हाँ, सो क्या होता है मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन? Mod x is equals to plus x and minus x. Mod x is plus x when x is greater than or equal to 0. It is minus x when x is less than 0. Correct? So here the integral, here the limits are 0 to 1. So both the values are greater than 0. So we will replace mod x with this value. Correct? So we will replace mod x with this value. So here this complete expression will be integration 0 to 1 x dx. Correct? So when we integrate x, so we will get x square by 2. Limit will be from 0 to 1. ये 2 और ये 2 कट जाएगा, अपर लिमिट पुट करोगे 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, सो विल गेट 1. करेक्ट? क्या ये समझ में आया? ओके. हाँ, अरे यार अभी छोड़ना, बताऊंगा बाद में, चांसेस कम. यहाँ तक क्लियर ना सबको? ओके. अब इसी को ना मैं दूसरे अप्रोच से बताता हूँ, बिकॉज सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए. अब इसी क्वेश्चन को मैं अप्लाई करके बताता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी से, दैट इज पी, दैट इज आई थिंक P2 प्रॉपर्टी 2 अप्लाई करते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टी 2 समझना. सेम क्वेश्चन यूजिंग प्रॉपर्टी 2. सो हियर इट इज इंटीग्रेशन -1 to 1 mod x dx. करेक्ट? mod x dx. So mod x, the value of mod x is either x or it is minus of x when x is greater than or equal to 0, when x is less than 0. Correct? So अगर हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते पहले इवन ऑड वाली, हम उसके बिना अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको mod x की वैल्यू पुट करनी होती. mod x की वैल्यू ऊपर या नीचे में से कौन सी पुट करेंगे? ऊपर या नीचे में से कौन से पुट करेंगे? ऊपर वाली नहीं, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू जब x ग्रेटर देन 0 है तब अप्लाई होगी, लेकिन यहाँ इंटरवल तो -1 to 1 है. समझ में आ रहा है? सो ये जो कंप्लीट इंटरवल है इंटीग्रेशन का -1 to +1, वी कैन टेक वन वैल्यू इन बिटवीन दिस, दैट इज 0. करेक्ट? सो फॉर दिस इंटरवल -1 to 1, x is less than 0. Correct? So when x is less than 0 in this interval, we can replace mod x with minus x. Correct? For the next interval, that is for 0 to 1, x is greater than or equal to 0. Correct? So we will write mod x as plus x for this interval. Correct? So we will divide this limit -1 to 1 in two parts. First part is -1 to 0, and the second part will be from 0 to 1. Correct? For this first part -1 to 0, mod x will be replaced by minus x. So it will be minus x dx. And for the second part 0 to 1, mod x will be replaced by plus x. So it will be x dx. Correct? क्या ये समझ में? अब जब इसको ये माइनस बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाय 2. लिमिट इज फ्रॉम -1 to 0. वहीं सेकेंड पार्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2. लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1. करेक्ट? ना पुट अपर लिमिट, सो ये माइनस, अपर लिमिट इज 0 स्क्वायर माइनस -1 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 2. करेक्ट? यहां पर अपर लिमिट पुट करेंगे, सो 1. करेक्ट? सो ये कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर इज 1, और ये क्या हो जाएगा? -1. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. सो यू विल गेट 1/2 + 1/2. तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 1. क्लियर? फंडामेंटल समझ में अगर नहीं आएगा ना, तो फिर प्रॉब्लम जाएगी. मैंने जो अभी कंसेप्ट बताया ये क्लियर रखना पड़ेगा. ओके. अब हाँ, ये आप लोग लिख लेना, देख लेना उसको. ठीक है? अब एक और तरीका समझो, एक और अप्रोच. ठीक है? क्या हुआ? एक और थर्ड अप्रोच भी समझना पड़ेगा, बिकॉज एओआई में आपको यूज होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में.
Okay, so the third approach to validate our answer, whether it is correct or not, that we can also use. So modulus function look like this. The graphical representation of modulus function is like this. Here we have to integrate this modulus function for the interval -1 to +1, correct? So integration of this modulus function, it means we have to calculate the area between these two intervals, between these two numbers and this graph, correct? So ये एरिया कैसे मिलेगा? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया से मिलेगा, clear? So this is basically a triangle whose base is 1 and height is also 1. So area will be half base into height, that means half. Height 1 होगी ना, because if you take x is equals to -1, you'll get mod of x is also 1. ठीक है? सो यहां पर देखो x की जगह 1 रखो, mod x की वैल्यू 1 मिलेगी जो ग्राफ प्लॉट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा. सो half will be area of this triangle, similarly half will be area of this triangle. So when you add both the area, you will get 1, correct? तो ये थर्ड अप्रोच है, बट ये नॉन इंटीग्रल अप्रोच है इसको फाइंड आउट करने का. ओके okay, so this was the first question. Now let's begin with the second one. Second question. So the second question is I is equals to integral 0 to 3 mod x minus 2 dx. ओके सो अब देखो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हो, या डायरेक्ट कर सकते हो या कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा. First, in definite integrals, that we will be solving for mod related questions only. No, not only mod related, some other questions are there, but here in your book modulus functions are more given. Yes, sir. Okay, yes, we can use p2 here, but how we can use p2, that we have to understand. So first we have to define this function mod x minus 2. For that we have to understand how we can write mod x minus 2. So mod x minus 2 is equal to x minus 2 और माइनस ऑफ x माइनस 2, ये उसकी दो वैल्यूज होंगी. कंडीशंस क्या होंगी? याद नहीं है, रिया ध्यान नहीं है, फिर प्रॉब्लम जाएगी. इधर उधर ध्यान नहीं, वो सब नहीं चलेगा, मैं वो एक्सक्यूजेस नहीं चाहता. व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो मॉड x माइनस 2 की वैल्यू ये होगी. व्हेन x इज लेस देन 2, तो इसकी वैल्यू ये होगी. इसमें अगर कंफ्यूजन होता है, इसमें है क्या प्रॉब्लम, ये ऐसा ब्रेक करने में नहीं है प्रॉब्लम, तो फिर बहुत बढ़िया. ओके सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओवरऑल नंबर लाइन है, इट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. ये जो अंदर वाला टर्म है ना, उसको इक्वल्स टू 0 कर दो, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2. तो पॉजिटिव कब होगा? जब 2 से बड़ा है. नेगेटिव कब होगा? जब 2 से छोटा है. तो वो 2 वो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल जाएगा. ठीक है, अब देखो यहां पर ये पॉइंट 2 आ गया. 2 के पहले मतलब लेस देन 2, x लेस देन 2. इस कंडीशन में मॉड x की वैल्यू क्या होगी? ऊपर वाली. ठीक है, मतलब कि ये सॉरी नीचे वाली, मतलब कि माइनस ऑफ x माइनस 2, करेक्ट. एंड फॉर दिस इंटरवल 2 टू इंफिनिटी, मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस 2, करेक्ट. So here the integral is from 0 to 3. So we will divide this integral into two different intervals. The first interval will be from 0 to 2 and next interval will be from 2 to 3. Correct? Because before 2 the modulus function is like this. After 2 it is like this. So for the first interval it will be from 0 to 2 and we will replace mod x minus 2 with minus of x minus 2 dx. And for the next interval it will be from 2 to 3 and we will replace this modulus function with x minus 2 dx. Correct? Now integrate the two parts and apply the limits, you will get the final answer. So in majority of question you have to do same thing. Solve this particular question completely and check your answer whether it is correct or not. हाँ
और मॉड वाले क्वेश्चंस के चांसेस सबसे ज्यादा हैं एग्जाम में आने के। डेफिनेट इंट तुम लोगों के एग्जाम्स में आए थे क्या, जिनके में डेफिनेट आया था? आए थे ना मॉड वाले? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो जिसमें वो वैल्यू टेबल से निकालने रहती, गिवन होती। हाँ, टेबल से वैल्यू निकालनी। हाँ, एक फॉर्मूला था, मैंने बोला लैम्डा, मैंने बताया था लैम्डा की ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू टेबल से निकालनी होगी, ये मैंने बोला था। ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा। तुम लोगों ने किसी को फोन किया था ना, पूछा था कि टेबल वा ओके। हो गया? क्या रहा फाइनल आंसर इसका? चेक करो एक बार। हम्म, क्या हुआ, इसको नहीं हो रहा है क्या सॉल्व? माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 2 x - 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 x - 2 dx, करेक्ट? सो इंटीग्रल विल बी x² / 2 - 2x। इंटीग्रेशन सही किया? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम्म। इसका इंटीग्रल क्या होगा? x² / 2 - 2x। लिमिट विल बी फ्रॉम 2 to 3। क्या ये स्टेप क्लियर है? ओके, नाउ वी विल अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर अपर लिमिट अप्लाई करोगे 2² / 2 -2 × 2। लोअर limit is completely 0, so there is no sense to write 0 here. It will be upper limit, so 3² / 2 -2 × 3 bracket close, minus lower limit, so it will be 2² / 2 -2 × 2. Sir, I got the answer. So it is it correct? Yes, Yes. sir, 5/2. Okay, good. In the next part, 2 ये कैंसल आउट हो जाएगा। 2 - 4, इट इज -2 और +2 प्लस 9/4 -6। तुम लोग सॉल्व एक्चुअली किए नहीं हो प्रॉपरली, ऐसा लग रहा है। वन बाय फोर आंसर इज 1/4। नो, आई थिंक इट इज रॉन्ग। 5/2 कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया क्या? ये सो हाँ, लिख ये -4 +2 -2 +2। Sir, that 3² / 2 minus. So you have written 2 × 3 or 2 × 2? It will be 9/4, 9/4 ना, 9/2। Yeah, yes, sir. 9/2 plus 9/2. Yes, now it is correct. So you'll get 5/2। Sorry, it is 5/2। Yes, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हटा दो। कृष्णा, कुछ डाउट है तो पूछ जल्दी।
So like while beginning the question, how we have to like start our question, like what we have to solve first. Like we have to determine if the function is odd or even. No, it is not necessary that every function will be either odd or even. And also that odd even property can be applied only when the limits are from minus a to plus a. But here the limit is not like that. So we cannot do this question by that The way. which property we have used here? Which property? That property 4. I think it was P2. P2. Check P2. It is when we divide the interval with taking some intermediate value C. Look, A to C plus C to B. That property was used. 0 to 2 and 2 to 3. Correct? Okay. Next question. So once can you please move back to previous slide? So like you have written no 0 to 2 and 2 to 3, sir. So like how we have to show that, like how we have considered it. Can you please explain that part? Yes, it is here. How we have written like this, it is just right over here. Because the modulus function mod x minus 2 have two different values based on the condition of x. When x is So like greater, you can consider any random value between 2 to infinite and then minus infinite to 2. no, not any random. I have considered this 2 based on this mod because it is mod x minus 2. So that's why this 2 is the that critical point before which the function is different and after which the function is different. Okay, because before 2 Yes, sir. it will be minus of x minus 2 and after 2 it will be plus of x minus 2, correct? Yes, sir. So just look at the next example, it will be clear to you. Next question. Next question is from I is equals to integral limit is from 0 to 2 mod x, sorry, x minus 1 upon mod x minus 1 dx, correct? So ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से सुनना. First we have to define this mod x minus 1 function. Mod x minus 1. So this function will have two different values. कौन कौन सी होंगी? Plus x minus 1 and minus of x minus 1. Correct? So plus x minus 1 when x is what? Greater than or equals to 1. Because it is minus 1 right over here. So minus x minus 1 को equal to 0 करोगे, you will get x is equal to 1. And less than 1 when x is less than 1. Correct? So this complete interval 0 to 2, now it will be divided in two parts. The first interval will be from 0 to 1 and the next interval will be from 1 to 2. Correct? Chevy, is it clear why we have taken this one and why we have divided this in two parts? Okay. Yes, sir. And so like sign will be also same like in previous questions. Previous question also we had the same format. This same? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. Now in numerate in the first part, huh? In the first part, the numerator will be same x minus 1 and denominator mod x minus 1 will be replaced by which value? This one or this one? This value. Second value? Second value. Why second value? Because here it is written x is less than 1 and this interval is for less than 1. Correct? So the denominator modulus function will be replaced by this value. Whereas in the second part, the denominator will be replaced by first value x minus 1, correct? हाँ होगा ना. So this part integration 0 to 1, ये दोनों terms cancel out हो जाएंगे, you will get minus 1 dx only. Whereas in the second part, the limit is from 1 to 2 and you will get 1 dx only, correct? बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? Further,
We can take minus or outside and integrate 1. So integration of 1 is रिया ज्यादा पढ़ लिए लग रहा है. ओके, ये क्लियर, ये स्टेप क्लियर. Okay, now apply the limits. So when we apply upper limit, it is 1 minus 0. When we apply lower limit, it will be 2 minus 1. So this term will be minus 1. This term will be plus 1. And minus 1 plus 1, you will get 0. So can you please explain how you have determined the values for denominator? Like you have considered minus bracket x minus 1. Yes. Yes, I will explain that. Just look at this part. Here, the limits are from 0 to 2. Correct? And here, the modulus function has two different values. The first value when x is greater than 0, and the next value when x is less than when x is greater than 0, greater than or equal to 1, when x is less than 1. Correct? So this one is that critical point before which the function has this value, uh, or after which, so after 1, so greater than 1. So for this interval, mod x minus 1 will be replaced by x minus 1, and before 1, this mod x minus 1 will be replaced by this minus of x minus 1. Correct? So we will divide this complete interval, which is initially from 0 to 2, into two parts, that is 0 to 1 and 1 to infinity. Correct? Now, for the first part, that is for 0 to 1, we will replace mod x minus 1 with this value. So like you have taken 2 times mod value, like x minus 1 mod and there also. We have taken 2 times, like here and here. No, sir. Like where you're explaining, no? Yes. You have written, yeah, we have mod x minus 1, and then right after that, after 1, you have written mod of x minus So 1. both is nothing but mod x minus 1. Mod x minus 1 has two different values. It is based on this condition. Correct? Yes, sir, understood. Okay. हाँ, तुम लोगों को कहाँ डाउट है? अपर लिमिट लोअर लिमिट कुछ पूछ रहे थे, आ गया ना समझ में? क्लियर? स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. And sir, after that, we will determine our limits in this way. Like we'll start from 0 to 1, and then the other one will be in continuity, like starting from 1 to 2. Yes, yes, correct. Suppose if we have the upper limit like 7, so it will be from 1 to 7. Okay. Yes, sir. Conditions important है. So for the next question, first you have to understand how we can write mod x plus 2. So mod x plus 2, this will be either x plus 2 or minus of x plus 2. हाँ, लेकिन कंडीशन बताओ ना. When, एक मिनट रिया को बोलने दो. When x is what? Greater than or equals to? गलत. Correct. So minus 2, no? Yes, correct. And when x is less than minus 2. Correct? Okay. So here the integral is I is equals to integral. The limits are from minus 1 to 2. Correct? Sorry, minus 1 to 1 है ना? Minus 1 to 1. It is mod x plus 2 divided by x plus 2 dx. Correct? Okay. So first we have to determine. यहां तक क्लियर है ना? अब देखो हमको ये चेक करना है mod x plus 2 की वैल्यू क्या रखेंगे. mod x plus 2 की वैल्यू क्या रखेंगे?
तो बताओ क्या रखेंगे? इस क्वेश्चन में अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन ही नोट किया है, ठीक है। मैं मॉड एक्स प्लस टू की जगह पे क्या रखेंगे? देखो हमारी लिमिट कहां से कहां पर है? लिमिट है -1 से लेके 1। यस, -1 to 1। और यहां पर ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज -2। सो -2 विल बी इन बिटवीन दिस? नो, इट इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस, करेक्ट? सो बिफोर दिस पॉइंट x -2, before this, it means when x is less than this, it means this side x is less than -2, the value of mod x plus 2 is minus times of x plus 2, correct? For this interval, correct? And for this interval, that means for 2 to infinity, the value of mod x plus 2 is what? It is plus x plus 2. So this value is plus x plus 2, correct? समझ में आया कि नहीं आया? तो Sir, how you have written -1 to 1? it is given in this limit. Sir, in question it is 0 to 2. You are looking, I think, wrong question. 10 से 11. Okay, yeah, yes, sir. Yes. क्या इसके बाद का देखो, ये चीज समझ में आया कि नहीं? माइनस इंफिनिटी से -2, वैल्यू क्या होगी इसकी? माइनस ये वाली। और -2 से इंफिनिटी इसकी वैल्यू ये वाली होगी। ये समझ में आ गया? अब देखो, ये आपका जो इंटरवल है, इंटीग्रल की जो लिमिट है, वो कौन सी है? -1 to 1। वो कौन से में लाई कर रही है? ये वाले में लाई कर रही है। तो हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? मॉड x plus 2 पुट करेंगे। सो लिमिट विल नॉट बी चेंज्ड, इट विल बी -1 to +1 ओनली, सेम रहेगी। और जो मॉडुलस x plus 2 है, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय x plus 2 ओनली, करेक्ट? यहां दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे इंटरवल में सेम वैल्यू है फंक्शन की। सो x plus 2 और x plus 2 कैंसल आउट हो जाएगा। यू विल गेट -1 to 1 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, limit is from -1 to 1, upper limit minus lower limit, so 1 plus 1 you will get 2, so the answer is 2, correct? क्या हुआ कृष्णा? करेक्ट? ये क्या है? ऐसा बीच में कैसे चल? अच्छा, प्रोबेबिलिटी इस बैच में। तुम लोग कितने दिन के लिए जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अच्छा, ओके, देखता हूँ। तुम लोग 14 को जा रहे हो ना? ठीक है, उसके पहले डिसाइड पढ़ा दूंगा, वो सब भी करा दूंगा, रिवीजन भी करवा सकता हूँ, लाइक मैट्राइसिस डेट वो चेक कर लेंगे, वो मैं एक बार देख लूंगा, डिस्कस कर लूंगा बाकी लोगों के। ओके, ये क्लियर है। सिमिलरली आज की क्लास एंड करता हूं, मैं कुछ होमवर्क्स दे देता हूं, वो आप लोग ट्राई करना। एट बिकॉज मॉडुलस फंक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और डेफिनेट इंटीग्रल विल बी बेस्ड ऑन दैट। जस्ट मैं होमवर्क नोट करा रहा हूं, पहले वो नोट कर लो, फिर डिस्कशन करते हैं। सो सॉल्व फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2। Sir, once again, please. यस, fifth part of question 1, first part of question 2, and from question number 5, and from question number 5 solve all three parts for 5 के तीनों पार्ट सॉल्व करने, 5 का 1 2 3, and from question number 5 solve all three parts from question 5. Okay, next homework is from examples. So solve example 1, both the parts,
and also try example 2. Example 2. I think example 2, this type of questions are more important. Yes. Okay. So that's it for today's session.